स्वागतम व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं गेंशिन इम्पैक्ट। तो मैं गेंशिन इम्पैक्ट जो है शुरू से नहीं खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले खेला है गेंशिन इम्पैक्ट। एक साल पहले मैंने गेंशिन इम्पैक्ट को लॉगिन किया था और खेला था मोबाइल पे, और मेरे पास एक अकाउंट है जो कि मैंने फुल्ली कंप्लीट नहीं किया है गेम को। जहाँ पर तो हम लोग वही से कंटिन्यू करेंगे हमारा गेम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम को। क्योंकि गाइस अगर मैं फिर से पहले से स्टार्ट करूँ एक अकाउंट, तो मुझे जो है मुझे लगता है कि जेन्युइन रिएक्शन मुझे मेरा नहीं आएगा, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। जो मैंने खेल चुका है वो फिर से खेलने के लिए मजा नहीं आएगा। तो ल्यूए के बाद हम लोग के ल्यूए का जो है स्टोरी भी हम लोग का फिनिश हो चुका है, और हम लोग ल्यूए के पास से कंटिन्यू करेंगे स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं गेम को। चलते हैं गेम के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द गेम गाइस, हियर वी गो। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा जो है मेन स्टोरी का मिशन से। तो चैप्टर 2 प्रोलॉग एट ऑटम इन स्कारलेट लेब्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेस्ट को। तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। कहाँ से जगह से जाते हैं? और जो हमारा बैंड के साथ मुलाकात भी हो चुका है, साइड क्वेस्ट भी हो चुका है हमारा। चाइल्ड डे हमको चाइल्ड है शायद, या नहीं चाइल्ड है नहीं, कोई और कहते हैं आई पैच वाला। Are you okay? Paimon never imagined your sister would have sided with the Abyss. Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going. Right? ठीक कहा तूने। She said we needed to reach the end of our journey. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. क्या ऑप्शन चूज करते? थैंक यू पामन। और तो ये कह रहा है कि हमारा जो बैंड है जो वही विलेन है सबसे बड़ा, शायद ऐसा लगता है हमको। इस वर्ल्ड में जो है वही सबसे बड़ा विलेन है। सारे जो मॉन्स्टर है उनको कंट्रोल करता है, उनका लीडर कह सकते हैं शायद, या फिर भाई एक्टिंग लीडर, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये पता चल गया है। तो अभी वो कहा कि हमको जो है पूरा जर्नी खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से हम लोग का मुलाकात होगा, तो हम लोग फिर से जर्नी में जाएंगे। तो इसका बैन जो है बुरा का साइड में इसको लगता है, मतलब स्टोरी की हमको लगता है शायद, पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक गेम ही कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। तो थैंक यू पाइमॉन मुझे दिलासा देने के लिए। Travel buddies are supposed to look out for one another. भाई मुझे वैसा ट्रैवल बड़ी चाहिए भाई पाइमॉन की तरह। If we want, oh, you mean the guy that took your sister away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Yeah, Paimon bet she's the key to understanding this whole mystery. So yeah, well, we've ruled out 2 guides so far, the Animo and Geo Archons. So next. So ऐसा है कि ये लोग जो है ट्रैवल करते हैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रैवल, या फिर ऐसे ही शायद कुछ, या फिर कोई प्लैनेटरी ट्रैवल, ऐसा कुछ होगा। तो ये लोग इस वर्ल्ड में ट्रैवल करके आए हैं, और उसके बाद जब ये निकलने जाते हैं तो एक गॉड आता है, गॉड आता है, और इसका जो है इसको बहन को अलग कर देता है दोनों से। और ये अभी यहाँ पे पाइमॉन के साथ जो है सारे प्लेसों को बचा रहा है, अल्टीमेटली अपने बहन से बचा रहा है, हमको जो पता चला है। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट हमको मिला है। सो कहाँ से जाए, इलेक्ट्रो आर्कॉन के पास या फिर इनाजुमा में? ओके, सब लोग जो एनिमो गॉड जो है वेंटी और जियार्कॉन का मतलब कि ल्यूए के गॉड जो है, क्या नाम था, जोंगलिंग, उनसे हम लोग का मुलाकात हो चुका है। तो हम लोग को पूछ रहे हैं कि लेट्स गो टू इनाजुमा या फिर लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रो आर्कॉन। चला था पहले इनाजुमा पे चलते हैं। Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. We'll have to find some other way in. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's found someone already.
Mako in Lua Harbor. She's from Inazuma. Let's see what she has to say. तो इनाजुमा पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाना आसान नहीं है। कुछ शायद मेथड है जाने का, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। और हम लोग ये पूछने वाले किसी को जो कि इनाजुमा से है कि कैसे जाते हैं उधर। तो मैं आप लोगों को जो है स्टोरी समझाता जाऊंगा। अगर किसी को नहीं समझ आता है कुछ भी तो मैं समझाते जाऊंगा धीरे धीरे करके, कोई भी बात नहीं है। Hello. Oh, बैनर में I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? जल्दी बोल। So that's why you're here. इतना Well, slow है। there is a way, Great! We came to the right person. but the chance of success is incredibly small. It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reach the end. Then, I blacked out. ओके, तो जितना बोला है समझा देते हैं। तो इसने कहा है कि इनाजुमा से निकलने का वो ऐसा कोई तो रास्ता नहीं है, लेकिन जो है शायद कोई वाटर जो है रिवर या फिर जो सी है उससे इसने निकला है एक राफ्ट बना के। और उस वहाँ पर भी उसको जो एक स्टॉर्म आया था जब वो जा रहा था, उसका सारा जो है राशन भी खत्म हो गया था। बहुत दिन से ट्रैवल कर रहा था, उसका सारा राशन जो है खाना पीना की सामान सारा खत्म हो गया था और वो बेहोश हो गया था। But, to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Ah, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule, loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this, but after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. तो बोल रहा है कि ऊपर एक ट्राई कमीशन में 3 जो है टीम ऐसे की कमीशंस है जो गवर्नमेंट करते हैं, और वो लोगों को जो है वैसे ही बाहर आने नहीं देते। बहुत ही टाइट स्ट्रिक्ट जो है उनका रूल है जो राइडेन शोन के अंडर में है वो लोग। और जो बता रहा है कि वहाँ पर जाने के लिए परमिट लगता है, और बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा हम लोग का कोई कारण ना हो तो मतलब ज्यादा जरूरी कारण ना हो तो हम लोग ना जाए उधर, लेकिन हमको तो जाना पड़ेगा। क्यों हमारा बहन जो है उस तरफ गया है उसका रीजन हमको जानना पड़ेगा। You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Suppose, and even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. मार के चले जाएंगे Seems उनको, like इतना they मत सोच really तू। don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? तू किस लिए आया पायमोन? तू अकेले ही काफी होगा। तुझको देख के वो लोग ऐसे ही जो है बोलेंगे कि आई है आप यहाँ पर, इतना क्यों रहे तो। But they have Rito, but there's a place for Outlanders to go, right?
व्हाट इज रेटो, मुझे नहीं पता। मैं They ये only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. तो बता। The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. हाँ तो That's not what I meant. तो भाई You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. Paimon's sure Beto of all people will be able to get us there. Her crew is super strong. But Paimon wonders if she'll be willing to take the risk. ओके तो गाइस जो हम लोग इलीगली इंटर करने वाले हैं इनाजुमा के अंदर, The Alcor is the इसमें हम लोग flagship of the ना Crux हम लोग fleet. इलीगली I heard that it's currently anchored by Goodwin's इलीगली Stone आएंगे Forest जैसे on a supply क्या run. बताए This might be your best chance. इमिग्रेंट्स के Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. कैप्टन बेडो जो मेरे पास है भाई, मैंने देखा है बेडो, बहुत सारे लोग बेडो को मतलब बेडो के लिए एकदम क्या बताओ पिता है वो, ऐसा नहीं लड़के ही सिर्फ, बहुत से लड़कियां मैंने देखा है जो यूट्यूब पे, वो भी बेडो मतलब क्या बताऊं मैं गाइस। बेडो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, अच्छा भी है, मैंने सुना है, मैंने यूज किया, उसका शील्ड बहुत ही अच्छा है। और मैं जो है मेरा जो है जेम्स बचा रहा हूँ एक अच्छा कैरेक्टर लेने के लिए। और चलिए क्या है इधर, हम लोग कभी बेडो के पास जाना होगा, इधर हम लोग अभी कभी किसी से फाइट नहीं लेंगे, वैसे ही जाएंगे बेडो के पास। और गाइस मुझे और एक चीज जानना था, मेरे पास 3 पोस्टर सॉर्ड है, मुझे पता नहीं कौन सा अच्छा है। इधर वेपन में रुक जाओ, मेरे पास एक है ये जो है लायंस रोड, ये है प्रोटोटाइप रैनकोर, और ये है फेबोनियस सॉर्ड। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है मुझे बताना, क्योंकि मुझे उससे मेन करना है वेपन मेरा। ये मुझे स्पिन में से मिला था बहुत पहले, 7 महीने पहले शायद। लायंस रोड है ये, तो मुझे बताना कौन सा ज्यादा अच्छा सबसे अच्छा। मुझे फाइट नहीं करनी टीम से, वैसे ही हरा दूंगा कोई मेरा जो है वो थोड़ा स्पाइडर का। अरे कलेक्ट ओके मिल गया एक, ज्यादा मत कर, बेडो के पास जाना होगा। ओके गाइस मुझे सजेशन देना कि मुझे कौन सा जो है अभी मैं दिखाता हूँ। मैं अभी C33 में हूँ, लेकिन मेरा आईफोन बहुत ही लेकिन शायद मुझे लगता है नूब है। मुझे सजेशन देना कि मैं कौन सा वाला जो है यूज करूँ, कोई भी चीजें। उतर जा, ऊपर से हम कूदेंगे, जाएंगे क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये मैप में देख लेते हैं सबसे पास कहाँ से होगा। इधर से सबसे पास होगा, कैसे जाएंगे? ओह वाह ओके ठीक है, एक काम करते हैं, उड़ के जाते हैं एकदम पहाड़ के ऊपर चलते हैं हम लोग। मैं मिलता हूँ आप लोग को पहाड़ के ऊपर एकदम। लगता है पहुंच जाएंगे हम लोग, ऊपर चढ़ गए गाइस, लगता है पहुंच जाएंगे जो शिप में, लगता तो है अभी तक कि पहुंच जाएंगे, देखते हैं अभी। ओके तो हम लोग शिप पे उतर चुके हैं और हम लोग एकदम ऊपर उतरे हैं शिप के, जहाँ पे मुझे एक लग्जरियस चेयर्स भी मिल गया है। लग दिख रहा है A reward on the road. जल्दी से दे, सिर्फ 10। वो नहीं दिया है ओके। बेडू इधर है क्या? नहीं, उधर है कोई गुस्से वाला आदमी का
आवाज आ रहा है. With the traveler, what are you doing? Looking for the captain. Does she look like she's someone you should just looking for? Wait, someone get over here. Try this. Story. मेरे साथ फाइट ले रहा है अभी. अब मुझे बोल रहा है कि भाई मैंने ड्रैगन्स के साथ लड़ाई किया, हल्के में मत ले. गॉड्स के साथ मैंने मुलाकात किया है. Captain said, you are the bed. See, the captain said, she's been deep in the thought recently. Keep your eyes open and try not to disturb her. कुछ बोला है मैंने नहीं देखा. ये होता है भाई. बॉयज क्यों नहीं है, मेन स्टोरी है ये. ओके, लोन शी विल अगेन टॉक टू द सूलिंग. हु इज द सूलिंग? ये बच्चा क्या कर रहा है इधर? When will we finally be able to get up the ship? Who snuck onto the ship, right? I could hear Uncle Jules. तेरा अंकल है वो? अंकल को बोलना ज्यादा ना दिखाए. Still, I wonder when I will be finally be able to go to the city. Aunt Vincing in the last time Chang क्या नाम है? I would play with her. You should still be able to go to the city, right? Thank you. Okay. पेड़ों के साथ दिख. ये तू वाला कैरेक्टर है ना? Oh, if it isn't the traveler in Paimon. हम लोग आ चुके हैं. I knew you guys would come. Paimon? What a fascinating being. Oh, ये काजू है guys. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Well, I can't argue with that. Okay, then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. 1, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue, and with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this, it's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Okay.
interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You? Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. You just want him to तो take हम part लोग in को your जीतना tournament. पड़ेगा टूर्नामेंट में इनाज़ुमा में जाने के लिए What's wrong और with हम लोग that? जीतेंगे The more talent we have, the better the tournament will be. तू से ही I हराएंगे couldn't let a सबको competitor देख like लेना you fall through the net. तू है मेरे पास What are we gonna do? Looks like we... Great. Okay. Then let's get you signed up. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. कि हम लोग को जो है